Take a look at your hand for a moment. It looks simple, right? But what if I told you inside your body are trillions of tiny living structures working day and night? So they are so small that you cannot see them with your eyes. But they help you to think, walk, grow, breathe, and even smile. These tiny structures are called cells. And today we are going to on an amazing journey inside the cell. So hello students, welcome back to AdhigamX, where science becomes easy and exciting. In today's video, we will learn what a cell is, who discovered it, types of cells, parts of cells, and why cells are called the basic unit of life. So are you ready? Let's begin. तो सबसे पहले समझते हैं सेल क्या होती है. What exactly is a cell? Cell is the smallest living unit of life. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट जो यूनिट है जिससे वो मिलकर बना है वो क्या होती है? सेल. एंड हियर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड यू इज मेड ऑफ सेल. हमारे चारों तरफ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं वो सब किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं. यस, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म that includes humans, animals, plants, and even tiny bacteria. So we call it the basic unit of life. Okay, think like this. A huge building is made of small bricks. जैसे एक बिल्डिंग छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है ना, इन द सेम वे आवर बॉडी इज मेड ऑफ टाइनी सेल्स. हमारी बॉडी टाइनी सेल्स, छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना होता है. Isn't that amazing? But now a question comes to mind. If cells are so tiny, how did scientists discover them? So in 1665, scientist Robert Hooke माइक्रोस्कोप से कॉर्क का थिन स्लाइस ऑब्जर्व कर रहे थे एंड सर्टनली उन्होंने बहुत सारे टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स देखे. ये स्मॉल रूम्स की तरह दिख रहे थे, सो उन्होंने उन्हें नाम दिया सेल. And that's how the cell was discovered. Now here comes another amazing fact. सभी living organisms same number of cells से मिलकर नहीं बने होते. कुछ organisms सिर्फ one cell से ही survive करते हैं, while others need trillions of cells. So let's understand two major types of organisms: unicellular and multicellular organisms. सबसे पहले हम समझते हैं unicellular organism. Unicellular क्या होते हैं? Uni means one. So unicellular organisms are made up of only one cell. For example, amoeba, bacteria, paramecium, and surprisingly, ये one tiny cell सब कुछ कर सकता है. It can eat, move, grow, and reproduce. Organisms made of many cells are called multicellular organisms. For example, human, plants, animals. And here's the coolest part. In multicellular organism, different cells perform different jobs. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बेटा? डिफरेंट सेल्स डिफरेंट काम करते हैं. फॉर एग्जांपल, मसल सेल्स हेल्प्स अस मूव, नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस, ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. सो बेसिकली आवर बॉडी वर्क्स लाइक अ जायंट टीम. ऑलराइट, अब समझते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेल. फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन. इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल. ये क्या होती है? सेल की एक आउटर कवरिंग होती है. इट कंट्रोल्स व्हाट एंटर्स एंड लीव्स द सेल. कि सेल के अंदर क्या एंटर कर रहा है और सेल से क्या एग्जिट कर रहा है. इसको कौन कंट्रोल करता है? सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है. सो यू कैन थिंक ऑफ इट एज द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द सेल. सो नाउ नेचुरली यू मे आस्क, व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल? Cytoplasm. The jelly-like substance inside the cell is called cytoplasm. All the important activities of the cell happens here. Cell की जितनी भी important activities होती हैं, chemical reactions होती हैं, यहीं पर होती हैं. You can imagine it as the workplace of the cell. इसको हम क्या बोलते हैं? Cell का workplace. And now comes the most important part of the cell, the control center, the brain of the cell, nucleus. It contains genetic material. इसमें क्या होता है? Genetic material होता है. जिससे माता पिता से बच्चों में क्या होता है? लक्षण ट्रांसफर होते हैं. So without the nucleus, the cell cannot function properly. But here is something very interesting. Plant cells and animal cells are similar, yet they are not exactly the same. So let's compare them. Both plant and animal cells contain cell membrane, cytoplasm, nucleus. लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज वैक्यूल. अच्छा, एनिमल सेल में सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है. And because of the cell wall, plant cells are usually more rigid in shape. So अब तक हमने क्या समझा? Cell is the basic unit of life. Now we understand why are cells so important. Cell इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? Cell have living organism. Cell क्या करते हैं? Living organism को help करते हैं to grow, repair and damage parts, get energy and perform all life activities. In simple words, we can say without cells, life would not exist. Alright, now before we finish, let's quickly revise everything we learned today. तो हमने सेल पढ़ा. सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर क्या होते हैं? जो सिर्फ एक सेल की नीड होती है, जिनको सिर्फ एक सेल की नीड होती है. मल्टीसेलुलर क्या होते हैं? जिनको मैनी सेल्स की नीड होती है. थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द सेल हमने पढ़ा. सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस. एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल. अब आप बताएंगे हु डिस्कवर्ड द सेल? व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द सेल?
Alright, if you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe to AdhigamX for more fun and easy science lessons. And remember, science becomes easy when we learn step by step. See you in the next video.